to how to make a tester. We make a simple tester using a cell or a battery, or even a screwdriver, a bulb, or an LED. So to test whether the tester is working or not, so in first case we'll connect the wires with the metallic part of the screwdriver, and the bulb glows, that indicate it is a good conductor. And when we connect the wires to the handle of the screwdriver, that is either made up of either plastic or wood, that will not make the bulb to glow, and that indicates that it is a poor conductor. So quickly, when we recall what are conductors and good and poor conductors, those materials which allow electric current to pass through them are good conductors, which do not allow electric current to pass through them are poor conductors. And how do we come to know that they are good conductors or bad conductors? When the bulb glows and when the bulb does not glow. So in class 7th and 6th, we have done for materials which are mostly in solid state. So we want to find out whether liquids also can be classified in the same manner as good conductors or poor conductors. तो जब हम बल्ब का एज अ नोटिसेबल ऑब्जर्वर फीचर हम उसको करते हैं, तो हमें पता लग जाता है अगर गुड कंडक्टर अगर बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब कैसे ग्लो करता है, ये क्यों ग्लो करता है? इट इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट मीन्स it is the effect produced due to heating effect of the electric current is passed. So filament of the bulb gets heated up, and when it gets heated up, it starts glowing, and that is how we see, and that indicates that it is a good conductor. But in certain cases, जैसे कि हमने वीडियो में observe किया था, what I had shown you the activity, and also we have if you have tested it at home, जो मैंने आपको request किया था कि आप लोग एक simple tester घर पे बनाकर as many liquids as possible आप test करेंगे. तो अगर आपने नोट किया होगा जिन बच्चों ने कि कुछ ऐसे liquids भी थे जहाँ पर bulb was not able to glow properly, but it is a good conductor. It is a good conductor. तो हम लोगों ने in place of bulb, we can, in certain conditions it does not get heated up to that extent, so we can use, instead of a bulb, we can use an LED there. LED is light emitting diode, and it is the one which can glow when very feeble current is also flowing so through the circuit. So this is one replacement we can do to find out the nature of, conducting nature of any liquid. And we have tested a variety of liquids which are found easily at home, and it was noted that some liquids are good conductors of electricity and whereas some are poor conductors of electricity. लेकिन एक और बात भी fact हमने note किया था कि most of the materials under certain given conditions become conductors, as we have seen, or we can recall in case of air also. Otherwise, air is a poor conductor of electricity, but in certain conditions, it starts becoming conducting. Okay, it becomes a conductor. इसी तरह से हमने, when we see that most materials can conduct under certain conditions, तो जब हम distilled water को हमने test किया, the bulb did not glow, the LED did not glow, indicating that distilled water is a poor conductor of electricity. But when you add some amount of salt, ये हमने activity observe किया था through a video, कि जब हमने उसमें थोड़ा सा salt add कर दिया and then we pass the electric current, the LED starts glowing. That indicates कि अगर हम conditions vary कर देते हैं, तो materials या liquids जो है, they start conducting current. So this was observed with a tester where there was an LED, which was working on the principle of heating effect of electric current. Lekin, if we are not able to use an LED, alternatively electric current has another effect that is called as magnetic effect of electric current. तो हम magnetic compass को एक use कर सकते हैं in the circuit, in the tester, to find out the nature of, conducting nature of any material. In case of LED, it starts glowing and we come to know. In case of a magnetic compass, the needle will show deflection. Deflection means it will move. And if the needle moves when the circuit gets completed, it indicates that it is a good conductor. If the deflection is more, it is a good conductor. If deflection is very less, that indicates it is a poor conductor. But
डिफ्लेक्शन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो वहां हम मैग्नेटिक कॉम्पस यूज करेंगे टू नो अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, टू नो अबाउट द नेचर ऑफ कंडक्टिंग नेचर ऑफ द liquid. So using a magnetic compass and knowing the deflection also, we can find out whether material is conducting or not. Now what are those materials called जो कि electric current को pass करते हैं? So any liquid that allows electric current to pass through them and it is good conductor of electric current is called as an electrolyte. इनके examples हैं acids, एक class of compounds है acids, पूरे acids, then bases, another class of compounds, and then the salts. Salt does not mean only the common salt. Salt are again a class of compounds जिनके बारे में हम higher classes में पढ़ेंगे. तो ये तीन class of compounds है, तीन class of substances हैं, acid, bases and salts, जो कि electrolytes हैं because they allow electric current to pass through them. On the other hand, अगर हम sugar solution लेते हैं या हम alcohol लेते हैं, they will not allow the electric current to pass through them. किसी तरह का कोई reflection नहीं show होगा magnetic compass में, that या फिर LED bulb नहीं glow करेगा. This indicates it is a non-electrolyte because it does not allow electric current to pass through it. हमने ये भी observe किया हुआ है through the activity that water in its pure form, that means distilled water, is a poor conductor of electricity, whereas tap water is a good conductor of electricity. We have seen this, and I had asked few students to send me an activity also of their observation of passing of electric current through water. Now the next part of the chapter is knowing about, we have already studied about heating effect, we know about magnetic effect, and the third effect of electric current is chemical effect of electric current. So when electric current is passed through these electrolytes, there are certain chemical reactions which are happening in it. तो वो जो chemical reactions होते हैं ना, उसमें क्या हो रहा है? Those electrolytes जब उनके through हम electric current pass कर रहे हैं, they are breaking down into some charged particles, and that process is termed as electrolysis. और वो substances जो कि undergo हो जाते हैं decomposition को जब electric current हम pass करते हैं, they are termed as electrolytes. अब कौन-कौन से chemical effects हमें कैसे पता चलेगा कि there is some chemical effect is happening when we are passing electric current through an electrolyte? So पहला है उसमें formation of bubbles of gas. अगर कोई gas के bubbles form हो रहे हैं जब हम electric current pass कर रहे हैं through an material, that indicates there is some chemical effect or chemical reaction happening. दूसरा है there some kind of deposition on one of the electrodes. There is some kind of deposition हो रही है on passing electric current, that also indicates that it is a chemical effect of the electric current. And third important one is change in color of the solution. मतलब अगर solution का color change हो रहा है, that also indicates. ये अपने आप में chemical reactions के भी indications हैं, observable properties हैं अगर कोई chemical reaction हो रही है. तो ये सारे के सारे तीनों जो हैं chemical effects of electric current indicate करते हैं, observable हैं, formation of bubbles of gas, deposit of metals on the electrodes, and third is change in color of the solution. Now, in this regard only, we passed electric current through water. Salil passed me a very good activity. He made a video of it and he forwarded it to me, and it was very good, where excellent work was done in showing that there are bubbles of gas, hydrogen and oxygen gas formed on the two electrodes when electric current was passed through it. And एक जो after this I may be able to show you that also. Oxygen जो है, that is being formed at the anode, that is the positive electrode, and the hydrogen gas is formed at the cathode. क्योंकि amount of hydrogen gas or hydrogen gas bubbles were double the amount, indicates that amount of hydrogen in 1 molecule of water is double the amount of oxygen present, because the amount of bubbles formed at one electrode, that is cathode, were large in number when compared to oxygen. And this you can see it when I'll show the video to you. Now, what are the uses of electrolysis? हम क्यों करते हैं electrolysis? सिर्फ ये जानने के लिए कि water में से जब हम electric current pass करते हैं तो hydrogen और oxygen gas form होती नहीं.
इसके और बहुत सारे यूजेस हैं. इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ओर्स जो होते हैं उनमें प्रॉफिटेबली उनमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स, और उस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज करते हैं. अब जो हमने मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, जब हमने एक्सट्रैक्ट किए उनके ओर्स में से, तो उनमें कुछ इम्प्योरिटीज भी थी. तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए भी हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं, अबाउट व्हिच यू विल बी स्टडीइंग इन हायर क्लासेस. And third very important application of electrolysis is electroplating. Electroplating is what we are going to study further, we can revise further, is coating of a desired metal on another metal. Then it is also electrolysis is also used for manufacturing of chemicals. बहुत सारे chemicals जैसे कि क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, जो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हमें बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए, उसके प्रोसेस में फॉर्मेशन में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज करते हैं. Now coming to one of the application of electrolysis, electroplating. Electroplating जैसे मैंने आपको बताया था कि it is depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity. इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम कोट करते हैं एक मेटल को दूसरे डिजायर्ड मेटल के साथ. अब इसकी 3 कंडीशंस हैं. आपने जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, सपोज ए ऑब्जेक्ट को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो आप उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हमेशा कनेक्ट करोगे. जिस मेटल से आप जो भी मेटल आप चाहते हो, डिजायर्ड मेटल है जिससे आप उसको इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हो, वो हमेशा पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड होगा. और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं एक सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होंगे, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल है. इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द मेटल विच इज टू बी कोटेड. बी का इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉट ऑफ ए, बी का इलेक्ट्रोलाइट होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. अगर हमने आयरन का एक आर्टिकल लिया और हमने सिल्वर के साथ उसको कोट करना है, तो हमने आयरन को कनेक्ट किया है टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड सिल्वर को कोट किया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ऑलराइट, एंड वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन. क्योंकि हम सिल्वर से इसको कोट कर रहे हैं, तो हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सॉल्यूशन बनाई है उसकी, और उसमें उसको डिप कर दिया. अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, सर्किट विल बी कंप्लीटेड, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो सिल्वर और नाइट्रेट आयंस बच जाएंगे. सिल्वर आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड गेट डिपॉजिटेड ओवर आयरन एंड कोटेड. ठीक है, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ सिल्वर आयंस आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, द सिमिलर अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सिल्वर एज मेटल विल turn into ions and get into the solution, and hence this process continues as long as the electric current is being passed. ठीक है. अनदर सेटअप में देख लीजिए, यहाँ पर हम आयरन ऑब्जेक्ट को या आयरन स्पून को कॉपर से करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमने कॉपर आयरन ऑब्जेक्ट को हमने कनेक्ट किया है टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड कॉपर प्लेट को हमने कनेक्ट किया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल. और हमने किसमें डिप कर दिया है, क्योंकि हम कॉपर से प्लेट कर रहे हैं, तो हम कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन यूज कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो कॉपर आयंस इट विल गेट, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस. Copper ions will move towards the iron spoon, get deposited over here, and equal amount of copper as ions, as charged particles will get released into the solution as long as electric current is flowing. So this is another way of depicting how it is moving. These ions are moving towards, here we have used a brass cathode, copper anode and brass cathode, coating brass with copper. All right. What are the applications of electroplating? Electroplating की applications है silver and gold plating of jewelry. And बहुत सारे ऐसे articles जिनके आप लोगों ने, मुझे कुछ बच्चों ने क्लास बना के भेजा था, जहाँ पर उन्होंने अपने मेडल्स या फिर कप्स जो होते हैं आपको वेरियस कॉम्पिटिशन्स में मिलते हैं, तो उनके ऊपर सिल्वर गोल्ड की प्लेटिंग होती है. तो इससे क्या होता है, दे लुक वेरी शाइनी, इंप्रेसिव हो जाते हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो एक तो एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये है. दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एप्लीकेशन इज क्रोम प्लेटिंग. क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम से कवर किया जाता है आर्टिकल्स को, जैसे कि हमारे साइकिल के हैंडल्स हो गए, व्हील्स के रिम्स हो गए, बाथरूम टैप्स हो गए, डोर्स के हैंडल्स हो गए. तो ये सारे आर्टिकल्स क्रोमियम से प्लेटेड होते हैं. क्रोमियम जो है एक स्क्रैच रेजिस्टेंट metal है, और it will not allow the iron to get rusted also. It will improve the looks, appearance of the article also, and its value also, economic value also it increases. अब सारा आर्टिकल हम क्रोमियम से क्यों नहीं बना देते, क्योंकि क्रोमियम एक कॉस्टली मेटल है.
तो हम पूरा आर्टिकल उससे नहीं बनाते हैं, हम चीपर मेटल से आर्टिकल बनाते हैं, लेकिन उसको उसकी जो क्वालिटीज हैं वो इम्प्रूव कर देते हैं while coating it with chromium. The third important application of electroplating is galvanization. Galvanization is coating iron with zinc. We have already studied in class 7th also that it will not allow the iron articles to get rusted because zinc does not get rusted. Then tinning में especially we use it in utensils or articles where food is to be stored or food is to be cooked. तो वहाँ पर tinning जो tin एक metal है जिसको हम coat करते हैं over iron articles because it does not react with food and hence food can be safely stored in tin cans also. All right, so that is all, and let us recall these common daily life इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिकल्स जो आप लोगों ने देखे. कुछ बच्चों ने मुझे ये एक्टिविटी भी पास की थी जहाँ पर लोगों ने अपने घर में ऐसे आर्टिकल्स ढूंढ के उनकी फोटोज क्लिक करके they have sent me. So once you do this, you come to know that these are the ones where electroplating is being done, either chrome or any other silver or gold plating is done. तो वो electrolysis का example हो जाता है. Okay, that is all for this chapter. If you people have any kind of doubt, you can ask now, or else we will start with exercise assignment questions.